Today we will start with this English literature, optional for the CSS candidates and the PMS candidates. Okay, so this is a syllabus um, mentioned by the FPC for the English literature student candidates. So this is one of the important topic, George Orwell, 1984. Okay, so first we will study the this summary. Okay, then we will discuss this its central theme and also Urdu translations. Okay, of the summary. Then we will discuss further the chapter 1 history, so that we can the chapter 1 summary, so we can start this book, chapter 1 complete text and original text, and with this this with translation. Okay, so let's go. Overall summary of the entire novel English. This is the novel. Okay, 1984, written by George Orwell, 1984. So basically it about just like like restriction and the freedom, restriction on the expression, uh, restriction on the freedom of speech, etc. So all these discussion has been discussed in this novel. This from the some like undemocratic government, like a totalitarian style of the government, authoritarian style of the government, or dictatorship. So you have to face some restriction and some hurdles, obstacles, and some instruction, strict instruction from this government, that to follow some rule and regulation while speaking and expressing something. Okay, so so all these are depicted in this showing in this novel. So let's go. So what is the summary? Okay, 1984 is a dystopian novel depicting a totalitarian regime in the Oceania, where the party led by Big Brother exercise absolute control over truth, history, and even thoughts. Winston, Winston Smith, a low-ranking party member, becomes aware of the operation and begins questioning the party. He secretly writes a diary, has forbidden romantic relationship with Julia, and deeply believe and resistant movement led by O'Brien. However, the party surveillance and psychological manipulation, including torture in the Ministry of Law, crush any rebellion. Winston is ultimately brainwashed, forced to betray Julia, and comes to love Big Brother, symbolizing the trump of totalitarian control over individual freedom. Themes: totalitarian and absolute power. Okay, psychological and physical control. Okay, these are the main themes. Manipulation of truth and history. Individual versus state. Resistance and its suppression. Okay, now in Urdu. 1954, no, this is okay, 1984, 1984. ओके, एक डिस्टोरी नावल है जो कि ओशिनिया में एक मुतलक़ुल-अनान हुकूमत की काशी करता है. मुतलक़ुल-अनान हुकूमत मीन डिक्टेटरशिप. Okay, who just sees all these rights, the human rights, the basic fundamental right of the people. जहाँ पार्टी जिसकी क़यादत में बड़ी किरदार अदा करता है, हकीकत, तारीख़ और यहाँ तक कि ख़ैरात पर मुकम्मल कंट्रोल रखती है. यानी पूरा आपकी सोचों पर, आपकी बोलने पर पाबंदी है. ठीक है, कोई भी सोशल मीडिया वगैरह उस वक्त तो नहीं थी, लेकिन कोई भी आपकी कोई ऐसी चीज़ आपने ना वो सोच में लेके आ सकते थे, ना सोच सकते थे, और ना बोलने का आपको हक़ था. ठीक है. विंस्टन स्मिथ एक कम रैंक पार्टी का रुकन जुल्म सितम से आगाह होता है और पार्टी पर सवाल करने लगता है. वो खुद पर डर लगता है. जूलिया के साथ ममनू रोमानी ताल्लुक़ रखता है और ब्रायन की क़यादत में मुज़ाहमती तहरीक पर यकीन करता है. ताहम पार्टी की निगरानी और ज़हनी और जिस्मानी अज़ियत मिनिस्ट्री ऑफ लॉ किसी भी बगावत को ख़त्म कर देती है. तो
आखिरकार वो विंस्टन दिमागी तौर पर तब्दील होकर जूलिया से गद्दारी करता है और बड़ी ब्रदर से मोहब्बत करने लगता है, जो मतलब हुक्मरान हुकूमत की फतह की अलामत है। मरकज़ी मौज़ूआत मतलब हुक्मरान हुकूमत और मुकम्मल ताकत, ज़हनी और जिस्मानी कंट्रोल, हकीकत और तारीख़ की मनमानियाँ, फ़र्द मुकाबले रियासत, मुज़ाहमत और इसका दबाव। So let's go discuss the chapter 1 summary in English, okay? Chapter 1 introduce Winston Smith living in Victory Mansions, a decaying apartment complex. The word compressive monitored by the party in a Big Brother place is omnipresent. Winston is aware of the constant surveillance wire, telescreen, and the threat of the thought police. He began a diary in an act of secret rebellion despite knowing the risk of the torture and death. The chapter highlights the physical decay repeating societal operations. Okay, psychological control through fear and propaganda. The importance of the private thought is the first step to resistance. Okay, जो पहला चैप्टर है वो विंस्टन स्मिथ का तारुफ करवाता है, जो विक्ट्री मैंशंस में रहता है। एक सवाल पजीर फ्लैट कम्प्लेक्स दुनिया जागराना है, पार्टी की निगरानी में और बड़ी ब्रदर का जबर हर जगह मौजूद है। विंस्टन टेलीस्क्रीन के जरिए मुसलसल निगरानी और तोड़ पुलिस के खतरे से वाकिफ़ है। वो डायरी लिखना शुरू करता है, जो खुफिया बगावत का अमल है, बावजूद इसके किसी अज़ियत या मौत का ख़तरा है। बाप में जागर किया गया है, जिस्मानी ज़वाल और जिस्मानी जुल्म की कासी करता है। खूब और प्रोपेगेंडा के ज़रिए ज़हनी कंट्रोल, निजी ख़यालात की अहमियत, जो मुज़म्मत का पहला कदम है। चैप्टर 1 टेक्स अवे इंग्लिश even under surveillance, thought in private action offer resistance, fear in operation shape behavior in psychological state, writing reflection are the first step towards intellectual freedom. Orwell emphasizes symbolism of environment, small act to show control and rebellion. निगरानी के बावजूद ख्याल और निजी अमल मुज़ाहमत के ज़राए खौफ और जुल्म रवैये, मज़ालिम वाले रवैये ज़हनी हालत को शक्ल देते हैं। लिखता हूँ गौर फिक्र इल्मी आज़ादी का इब्तदाई कदम है। ओरियल राइट माहौल और छोटे अमाल की अलामत इस्तेमाल के ज़रिए कंट्रोल और बगावत को दिखाते हैं।